Welcome back, my dear students. We have almost trickled down to the culmination of the discussions relating to the human rights, and we are at the brink of the last module, that is human rights in India. In this lecture, we will try to understand how human rights mechanisms do operate in India and what are the institutions or the legislations apart from the constitutional obligations and commitments towards international treaties, obligations, or human rights standards in particular, and how they operate, especially with references towards other institutions जिनमें कमीशंस आते हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन है और भी कुछ कमीशंस हैं, बट प्राइमरीली वी विल फोकस ऑन amongst those जिन्हें कहते हैं फोर्थ ब्रांच इंस्टीट्यूशंस. एक्चुअली देयर आर थ्री, इनको फोर्थ ब्रांच इंस्टीट्यूशंस भी कहते हैं क्योंकि जो मेन थ्री पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के, दे आर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड judiciary, but there are some bodies which are quasi judicial and they also work in tandem with other branches in a fourth branch institutions कहते हैं to and they aid in upkeeping and maintaining the spirit of democratic fashion within the realm of national sphere. तो इसमें जैसे कमीशन आते हैं, इंफॉर्मेशन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन है एंड अदर कमीशंस. इंडिया में बहुत सारे कमीशंस है, रादर 7 or 6 ऑफ देम. उनकी तरफ रेफरेंस देंगे, बट प्राइमरीली विल फोकस ऑन द ह्यूमन राइट्स कमीशन बिकॉज वी आर कंसर्न विद द ह्यूमन राइट्स. तो ह्यूमन राइट्स के डिस्कशंस में we will obviously begin with the constitution because we can't remain oblivious of it, so we'll obviously begin with it. सो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में एक मैकेनिज्म का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजनल स्कीम है उसका कमिटमेंट का क्या स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस की तरफ. बिकॉज यू वुड हैव रेड दिस इन इंटरनेशनल लॉ के दो थियोरिस्ट्स हैं जो इंटरनेशनल लॉ सिस्टम के अडॉप्शन को लेकर के है, मोनिस्टिक एंड ड्यूलिस्टिक थ्योरी. मोनिस्टिक सिस्टम बिलीव्स कि इंटरनेशनल लॉ इज अ पार्ट ऑफ म्युनिसिपल लॉ और ये एक ही लॉ है. ड्यूलिस्ट्स बिलीव नो, प्रिंसिपल ऑफ सोवरेनिटी कम्स इन बिटवीन. Within the national sphere अपना law चलेगा, and if they find it repugnant that international law to their domestic laws, तो वो नहीं उससे bound है. And that is the principle that is followed by most of the nations. And India's position is very precarious and special in the case that it shows its commitments toward and obligations towards in the fulfillment of international treaties. And directive principles में भी आपको ये मिलेगा Article 51 में. But they have to be tested at the anvil of constitutionality if they are they do not fit within the canons, तो वो यहाँ नहीं चल सकते. बट इंडिया में मेजरली चूंकि ये एक डिप्लोमेटिक लेवल पे होता है, so once India shows its commitment to the international standards, judiciary has by far never overstepped or stepped into this domain. Rather, judiciary has proactively referred towards some international commitments and standards to which India was or is a signatory, and then applied it to the domestic jurisprudence in many cases. तो ऐसा तो हुआ है. In contrast to that, UK में it is ipso facto that international law is ipso facto a part of domestic law until it is repugnant. But India में पहले से वो part नहीं समझा जाता. It should be definitely done or what is called acceded to, or जिसे हम ratification कहते हैं, ratified at diplomatic levels, and then it becomes a part of it, and then constitutional courts are bound or duty bound to maintain those standards through pronouncements. तो पहले हम constitutional standards की तरफ जाएंगे, but I must begin this discussion with what Nani Palkhiwala had written in his book We the People, India the Largest Democracy. उस book के introduction जो dedication page है, he writes there that dedicated में to my countrymen who gave unto themselves this constitution but not the ability to keep it. So there the critiques like him believe that democracy should be in the fashion. Institutions aid in that, but democratic lifestyle is a fashion, and its spirit is that
it is for the people and the masses to make democratic institutions work in the first place. Questions will be there always. So we'll start with the constitutional provisions, which obviously will begin with the preamble itself. See, the Constitution of India is based on the principle of liberty, जो आप देखते हैं preamble में ही preambular goals जो जिन्हें हम कहेंगे liberty, equality, fraternity, justice में there is social, economic, political justice, equality of status and of opportunity, and liberty of thought, expression, belief, faith, and worship. इस तरह की liberties they have been enshrined in the preamble, and they as they were called in the case of Keshwananda Bharati as lofty and noble goals, and in which the court held that the constitution must be read and interpreted in the light of the noble vision and lofty goals as set out in the preamble. Although Re-Barabbari Union ने पहले ये कहा था that preamble is not a part of constitution, but Keshwananda Bharati went a step ahead and said that no, it's a part of constitution and constitution must be interpreted in the light of that. So at the commencement, ये goals जो हैं human rights के spirit के goals, these are found in the preamble, जिन्हें हम कहते हैं preambular goals. And there are provisions जो फिर correspond करते हैं, rather if we say the mirror provisions of the goals set out in the constitution, इसको further extenuate करते हैं preamble part 3 fundamental rights and part 4 directive principles of the state policy. So it's ostensibly clear that the provisions of the Constitution of India manifest a great respect for human dignity and its commitment towards equality and principles of non-discrimination and protection of the weaker sections and the concerns for their upliftment and maintaining adequate standards of living, जो आपको part 4 में मिलेगा. इसलिए health, nutrition and children के matter में. But these two instruments जो हैं actually fundamental rights का fundamental rights, which is in the part 3 of the constitutions, primarily stretching from articles 12 to 35. And then we have directive principles of the state policy, DPSP, which is in the part 4th, starting with obviously 36 and ending in 51 probably, yeah, 51A में चूँकि वो है fundamental duties. So there's a concept of duty चूँकि जो amendment से आया था. And you know that preamble में 2 amendments हुए हैं आज तक, but 2 words introduce हुए हैं. Amendment तो एक ही है वो, 42nd Amendment Act ने integrity और secularism डाल दिया था, socialist, secular, integrity rather. So these provisions are there in the constitution जो इन standards को maintain किए रखने के लिए दिए गए. For example, let's look just an example because this is not the class of constitution. If we look at for example the principle of non-discrimination, you can see that this goal has been tried to be attained by virtue of Article 14 जो एक blanketly principle of equality को incorporate करता है. Then इसके extension या explanation में या इसी के corollary में there are articles 15 and 16 as well, and in these 2 articles you will find that there is protective discrimination or affirmative action kind of provisions कि जो क्योंकि इक्वालिटी में आपने क्या करना है, जो ऊपर है उसको दबाना नहीं है, ऑब्वियसली जो नीचे है उसे ऊपर लिफ्ट करना है, तो बराबर करना है. सो एक तो ये है कि फैसिलिटेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी दैट इज इन 14 ऑब्वियसली, जिसको आप देखेंगे UDHR और ग्रेट अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स से ही लिया गया है, एंड मोस्ट ऑफ द ऑथर्स बिलीव दिस. आप किसकी कमेंट्री में ही पढ़ेंगे इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये 2 कोरोलरीज हैं इसमें. एंड फिर
समानता को, इस इक्वालिटी को, यकसानियत को बनाए रखने के लिए प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन के प्रोविजंस हैं कि जो डाउन ट्रॉडन है, वीकर सेक्शंस हैं, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, विमेन, चिल्ड्रन, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए दे प्रोटेक्टिव और अफर्मेटिव एक्शंस के 15-16 में क्लॉजेस हैं. एंड देन नेगेटिव स्टैंपिंग आउट ऑफ नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन जो ऑलरेडी प्रैक्टिसेस हैं उनके लिए देयर इज 17 and 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एंड अनटचेबिलिटी. इसी तरह फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है. अब देयर आर मेनी, अब उसमें एक एक करके तो नहीं जाएंगे. एंड ऑब्वियसली द बंडल ऑफ राइट्स आर्टिकल 21 and these bare provisions are well understood only and exclusively with the help of judicial pronouncements, or there is a catena of judgments जो हर एक केस में अब I'll recount many of them one by one quickly. For example, starting with Chameli versus State of UP equality के केस में, and many others like जिसमें प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन और नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सिमिलरली अदर्स जिसमें एग्जीक्यूटिव एक्शन या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को स्क्रूटनाइज और जुडिशियली रिव्यू किया गया, स्टार्टिंग इन द केसेस ऑफ A.K. गोपालन, सज्जन सिंह, मनिलवा मिल्स, केशवानंद प्रसाद, केशवानंद भारती, गोलकनाथ, मिनर्वा मिल्स, सज्जन सिंह एंड शंकरी प्रसाद. And there are these lines of judgments. एजुकेशन के मामले में P.A. इनामदार है कि जब P.A. इनामदार वर्सेस TMA पाई फाउंडेशन है, यूनिकृष्णन की जजमेंट है, एंड देयर इज वन मोर यूनिकृष्णन के साथ साथ मिस मोहिनी जैन है. यस, ऑब्वियसली मिस मोहिनी जैन. इसी तरह डिले इन एग्जीक्यूशन पे त्रिवेणी बेन की जजमेंट है. And lately this judgment of Joseph Shine versus Union of India, जिसमें इक्वालिटी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है और डिक्रिमिनलाइज किया अडल्ट्री को इंडिया में 497 को. It was found to be discriminatory on the basis of just gender. Similarly, the famous judgment of right to privacy, that is for Puttaswamy, obviously the 9 judges bench held this to be as and read it within Article 21, Puttaswamy versus Union of India. इसी तरह 2018 की जो जजमेंट थी, साबरीमाला जजमेंट से पॉपुलरली कहते हैं, उसका एक्चुअली जो नेम है इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला and many others. Actually, there is a plethora of judgments, or it goes on and on if we start counting them. So ये तो standards have been maintained by the courts itself, especially the higher courts, जिसमें rights को protect and preserve किया गया है and content specify किया गया है, and कुछ में कैटेगोरिकली रिकॉग्नाइज किया इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को. फॉर एग्जांपल, जैसे विशाखा के केस में क्लियरली कह दिया कि दैट in absence of any domestic mechanism, India's commitments towards the international treaties and obligations will give a persuasive value. And Mohini Jain की judgment में ये कहा कि that part 4 by reading right to education as a part of Article 21, क्योंकि 21A बाद में amendment से आया, 21A नहीं था तब तक. They said that we are not dragging this right to education from part 4 to part 3. They said we are deriving an inspiration therefrom and relied on Articles 26 of this new DHR and Article 12 of ICE-SER. So, and many others, Chairman Railway Board versus Chandrima Das. There is Rudul Shah versus State of Bihar, Nilabati Behara versus State of Odisha,
जो कंपनसेटरी जूरिस्प्रूडेंस की बेसिस पे बहुत सारी जजमेंट्स हैं, हुसैन अरा खातून, डी के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, हुसैन अरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जहाँ रेमेडीज के राइट्स दिए गए, राइट्स ऑफ द पर्सन अरेस्टेड दिए गए, हैंडकफिंग के अगेंस्ट राइट दिए गए, डी के बासु, दिस सुनील बात्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन. So there are many of these judicial pronouncements, though we are not here to take them one by one in under discussion. We'll just refer to them, that they recognize these rights, and primarily these important judgments have categorically recognized and maintained and identified and maintained the standards of human rights and the obligations of India towards their fulfillment. Now, coming back to the discussion which I had started moments ago, कि constitutional obligation क्या है towards international commitments? क्योंकि India is a democratic country and rather one of the largest democracy as per area, one of those. So, इसकी commitments, and it has adopted a written constitution. So its commitments are very much relevant in the context globally, and much debatable, because how it should maintain the standards. Everybody, especially in the subcontinent and generally across the globe, is much interested in knowing what those larger democracies do. So constitutional scheme में पहले आते हैं हम. Fundamental rights or directive principles apart from that, लेकिन directive principles में हैं. Yes, if we look at them, for example, we'll start with Article 51, और इसमें categorically especially 51C में obligation है towards international treaties or agreements. It is actually a provision which provides, इसका title ही है promotion of international peace and security. So it shows India's commitments. It is a pledge kind of, though it falls in the directive principles of state policy, or जो कि by virtue of this Article 36 non-justiciable हैं, and they are fundamental and primary in the governance of the country. So 51C provides for promotion of international peace and security. So the 51C especially shows India's commitment to foster respect for international law or treaty obligations. So there's a clear-cut mandate which has been provided by other provisions as well. For example, 73, Article 73 में executive को ये power दिया हुआ है. Its power extends to also towards fulfillment of obligation of treaties, or exercising rights with respect to the jurisdiction which is exclusively held by the government of India by virtue of any treaty or agreement. Similarly, there is rather two more provisions, 253 or 260. They must be read together. Articles 253, they are all articles 253 and 260. And entry number 16 of the Union list in Schedule 7 जो है उसमें यूनियन लिस्ट पहली लिस्ट है, फिर स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट. सो एंट्री 16 जो है वो यूनियन पार्लियामेंट को ये पावर है. सो व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज इज दैट द फर्स्ट थिंग इज दैट इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को लेकर के यूनियन पार्लियामेंट हैज द पावर, नॉट द स्टेट्स, नंबर वन. एंड इन दिस रिस्पेक्ट ऑल्सो Article 31C is very important in fundamental rights, though it was later on held by the Supreme Court that it will tear a wheel to look into the intention of colorable legislation, because Article 31C in a way directive principles को effect देने के लिए कोई ऐसी legislation का power भी देता है लाने को पार्लियामेंट का,
जो वायलेशन कर सकता है आर्टिकल 14 का या 19 का या दोनों का, एंड इट मेंटेन्स दैट इट laid down the provision जो कि amendment से आया था 31C, that it will not be called in a court of law for questioning. So on which the Supreme Court maintained that it will tear down the veil sometimes to look at the legislative intent of colorable legislation. So these are the provisions and constitutional schemes. Entry number 16 is also very important in the union list of Schedule 7. List 1 जिसे हम कहते हैं. So Parliament has the power to make the law. Now अब इसी स्कीम को अब हम कंपेयर करते हैं what how far India has maintained these standards. Although हमने थोड़ा थोड़ा वो कवर कर लिया है जब एक एक ट्रीटी कवर की थी, बट क्विकली मैं उनकी तरफ रैप अप करता हूँ. स्पेशली जो कोर ट्रीटीज़ हैं जिन्हें हम 9 कोर ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज़ समझते हैं, उनकी तरफ इंडिया का क्या कमिटमेंट है. Many of them have been ratified or acceded to. These are two words जो Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 में मिलेंगे आपको, और बुक्स में भी मिलते हैं. एक है accession और एक है ratification. दो इन इफेक्ट दोनों एक जैसे हैं तकरीबन, बट टेक्निकली फ़र्क ये है कि अगर कोई ट्रीटी इन फोर्स आ गई है उसके बाद जो होता है दैट्स कॉल्ड एक्सेशन. रेटिफिकेशन इज़ बिफोर coming into the force. So India acceded to some of the treaties and some of it were ratified by it. और ये कोर 9 ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज़ हैं वो ज़्यादा अहम है इसमें. तो इसमें समझने की बात यह है कि कुछ कोर ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज़ के प्रोटोकॉल्स हैं. इंडिया हैज़ रेटिफाइड द मेन कन्वेंशन बट नॉट द प्रोटोकॉल्स. कुछ हैं कि उनको ना प्रोटोकॉल रेटिफाई किया है ऑब्वियसली और ना मेन कन्वेंशन किया है. आई लिस्ट दोज. ठीक है, हम कुछ ट्रीटीज़ को काउंट करते हैं. फॉर एग्जांपल हम पहले काउंट करेंगे रेटिफिकेशन और एक्सेशन की ट्रीटीज़ को जिनको इंडिया ने आइदर रेटिफाई किया है या एक्सेशन किया है सॉरी. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, दैट इज़ जो मैंने आपको बोला था ICERD जो 1965 की है, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. ICERD 1965. सो इंडिया ने इसको क्विकली ये लिस्ट ही लिख रहे हैं हम उनकी जो रेटिफाइड है, जो नहीं है उनकी लिस्ट अलग लिखेंगे. सो ये इंडिया रेटिफाइड इट फॉर एट द वेरी टाइम, क्योंकि 1968 में ये इन्फोर्स आई थी तो इंडिया ने उसी टाइम इसको रेटिफाई भी कर दिया. इसी तरह वी हैव ICCPR. यहीं पे ये बता देता हूँ, ICCPR हैज़ 2 प्रोटोकॉल्स ऑप्शनल, 1966 की है, and India has not ratified those 2 protocols, but India is a party to ICCPR. Then we have ICESCR. It has a optional protocol of 2008. India has not ratified this, but ICESCR का India signatory भी है और ratify भी किया. Rather ICESCR को India ने बहुत late लिया, so it acceded to both of those treaties. We can't see ratification. Then we have CEDAW. 4 is Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, that is 1979. इंडिया ने इसको साइन भी किया और विद सम रिजर्वेशंस इसको रेटिफाई भी किया. साइन पहले किया, रेटिफाई बहुत बाद में किया. 1993 में रेटिफाई किया, 1980 के आसपास साइन किया था और 1993 में रेटिफाई किया. और इसका जो ऑप्शनल प्रोटोकॉल है 2008 का, इंडिया हैज़ नॉट रेटिफाइड इट, नाइदर साइंड इट. इसी तरह वी हैव कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, CRC जिसे हम कहते हैं, CRC 1989. India has acceded this treaty and India is bound by this treaty. और कौन सी है, Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Yes, Convention on the Rights of CPRD जिसे कहते हैं, persons नहीं, persons with disabilities. Convention on the Rights of CRPD, persons with disabilities. Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Yes, 2006 और इंडिया इसका रेटिफायर है. एंड देन इसका एक ऑप्शनल प्रोटोकॉल है CRC का,
एंड इंडिया ने उसको रेटिफाई किया हुआ है, विच प्रोहिबिट्स द रिक्रूटमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। ये 2000 का कन्वेंशन ऑप्शनल प्रोटोकॉल है, और इंडिया ने इसको भी, बाकी जितनी भी ट्रीटीज़ के ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स हैं इंडिया ने उनको रेटिफाई नहीं किया हुआ है। कुछ और ऑब्लिगेशंस हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, वो भी ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स में ही आते हैं, बट आई विल जस्ट रेफर टू देम, जिसमें फोर्स लेबर कन्वेंशन होती हैं, इक्वल रेम्यूनरेशन का कन्वेंशन है, और एबॉलिशन ऑफ फोर्स लेबर है, और डिस्क्रिमिनेशन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और ऑक्यूपेशन है। उन सब को इंडिया ने रेटिफाई किया हुआ एज अ स्टैंडर्ड। नाउ नॉट रेटिफाइड और एक्सीडेड टू में हम काउंट कर लेंगे उन ट्रीटीज़ को या उन प्रोटोकॉल्स को जिनको इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया है, या क्योंकि व्हेन इंडिया मेंटेन्स अ रिजर्वेशन और एनी स्टेट पार्टी मेंटेन्स अ रिजर्वेशन, दैट मीन्स किसी प्रोविजन को लेकर के उनके ऑब्जेक्शंस हैं उससे बाउंड नहीं रहना चाहते, रेस्ट ऑफ द ट्रीटी को रेटिफाई किया है। रिजर्वेशंस बगैर रेटिफिकेशन के नहीं हो सकती। तो रिजर्वेशन तो अलग चीज़ है। रिजर्वेशंस उन ट्रीटीज़ में भी कहीं कहीं हैं, आईसीसीपीआर में भी, जैसे राइट ऑफ फ्री सेल्फ डिटर्मिनेशन आर्टिकल 1 को रिजर्वेशन दी हुई है, तो विद रिजर्वेशन इट हैज़ रेटिफाइड आईसीसीपीआर। लेकिन व्हेन वी से नॉट रेटिफाइड, वी डोंट मीन कि रिजर्वेशन दिया हुआ है, इट मीन्स टोटली ये रेटिफाई नहीं किया। और रेटिफिकेशन सिग्नेचर के बाद का स्टेज है, मतलब सिग्नेचर थोड़ा अलग है। इंडिया या एनी नेशन बाइंड नहीं होता किसी भी ट्रीटी की ऑब्लिगेशन से सिर्फ साइन करने से, इट इज़ बाउंड बाय रेटिफिकेशन। सिग्नेचर इज जस्ट एन इंटेंशन कि हम इसको डिलिबरेट कर रहे हैं, या हम इसके प्रोविजंस पे विद इन डोमेस्टिक रियाल्म सोचेंगे एट डिप्लोमेटिक लेवल्स। सो जिसमें सबसे ज़्यादा जो इसमें अहम है वो है कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर 1984, जिसका यूएस भी पार्टी नहीं है। इंडिया हैज़ नॉट रेटिफाइड इट। इंडिया साइंड दिस कन्वेंशन बट इंडिया डिड नॉट रेटिफाई इट। इसी तरह है convention with relation to protection of migrant workers, International Convention on Protection of Migrant Workers, MRW, ICMRW, yes, International Convention on the Protection of Migrant Workers in 1990 की है. India neither signed it nor ratified it. India is not a signatory or ratifier of it. India has not ratified this convention, इसका साइन भी नहीं किया है. इसी तरह जो 2006 की कन्वेंशन है, जिसे हम आईसी पापड़ कहते हैं, इन अ फनी वे, वैसे ऐसे नहीं कहते हैं, ये है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स फ्रॉम एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस। ये एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस की ट्रीटी है 2006 की। इंडिया हैज साइंड दिस बट इंडिया डिड नॉट रेटिफाई इट येट। इसी तरह जैसे मैंने आपसे कहा, आईसीसीपीआर जो है 1966 का, इसका फर्स्ट ऑप्शनल प्रोटोकॉल है, और इंडिया हैज़ नॉट साइंड इट। और इसी तरह इसका सेकंड ऑप्शनल प्रोटोकॉल है, इंडिया ने उसको भी साइन नहीं किया हुआ। आईसीई फर्स्ट एंड सेकंड optional protocols. India is a party to the main treaty, but India has not signed these protocols, which is pertinent to abolition of death penalty and other things. Then there is, yes, optional protocol जो ICESCR का है, 2008 का ऑप्शनल प्रोटोकॉल है। ये तो 1966 की ट्रीटी है, और ये 1977 के प्रोटोकॉल्स हैं, ऑप्शनल प्रोटोकॉल। प्रोबेबली 2008 में आया था ये, या 2008 में ICSCR का ऑप्शनल प्रोटोकॉल है, जिसमें कंप्लेंट मैकेनिज्म था। इंडिया हैज़ नॉट साइंड इट नाइदर रेटिफाइड इट, ये 2008 की। इसी तरह ऑप्शनल प्रोटोकॉल जो सीडा का है, सीडा 1979, इसका ऑप्शनल प्रोटोकॉल है। इंडिया इज़ नॉट, ये 1990 का एक ऑप्शनल प्रोटोकॉल है, इंडिया हैज़ नॉट साइंड इट नॉट रेटिफाइड इट। कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर का तो मेन ही साइन नहीं किया है, तो अब इसका तो ऑप्शनल प्रोटोकॉल है, वो इट्स नॉट अ पार्टी टू इट। इसी तरह ऑप्शनल प्रोटोकॉल 2006 का जो है, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ CRPD, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़
2006 का ऑप्शनल प्रोटोकॉल एक है. इंडिया हैज़ नॉट signed this as well. तो ये ऑप्शनल प्रोटोकॉल को साइन, व्हेन वी से he has not signed, तो we mean by large कि रेटिफाई भी नहीं किया हुआ. इसके अलावा भी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो कुछ ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स में उनके भी डिक्लेरेशंस या रेजोल्यूशंस आते हैं, उनके भी कुछ कन्वेंशंस हैं जिनको इंडिया ने नहीं रेटिफाई किया हुआ है या साइन किया हुआ है. फॉर एग्जांपल एसोसिएशन का एक कन्वेंशन है, प्रोटेक्शन टू फॉर्म एसोसिएशंस एट्सेट्रा. इसी तरह कलेक्टिव बार्गेनिंग का एक प्रोटोकॉल है या राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग का एक कन्वेंशन है, वो नहीं. इसी तरह मिनिमम एज स्पेसिफाई किया गया फैक्ट्रीज में, लेबरर्स वगैरह में, वो इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया हुआ है. एंड वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर एक और कन्वेंशन है, ड्यू टू सर्टेन रीजंस. इनमें से भी किसी की पार्टी इंडिया नहीं बना हुआ है. सो दैट वाज अबाउट दो स्टैंडर्ड्स जो प्रैक्टिकली टेक्निकली इंडिया में अभी इन प्लेस हैं विद रिगार्ड टू इंटरनेशनल कमिटमेंट्स. अब चलते हैं उस मैकेनिज्म की तरफ जिसका पहले मैंने रेफरेंस दिया था, जिसे हम फोर्थ ब्रांच इंस्टीट्यूशंस कहते हैं. तो उनमें प्राइमरीली जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन का रोल है, बिकॉज अभी हम उसी को डिस्कस करेंगे. इसके अलावा भी कई सारे कमीशंस हैं, कमीशन इसके अलावा भी बहुत सारे कमीशंस हैं जो इसी के नेचर के हैं, जो itself they maintain specific standards of human rights, but particularly अगर कोई कमीशन डायरेक्टेड है towards these human rights, वो human rights commission है. And you know that human rights commission was established under the Human Rights Act. तो इसको Human Rights Act के बगैर पढ़ना तो incomplete है. Human Rights Act 1993. एंड ये एक्ट चूंकि अप्रैल में आया तो जनवरी में आया, इंट्रोड्यूस हुआ 1994 में. इसकी बस एक हिस्ट्री, टेक्निकल हिस्ट्री बता रहा हूँ, बिकॉज पहले 1993 के शुरू में मार्च अप्रैल के आसपास एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, और दैट कॉन्फ्रेंस एक्चुअली वाज कॉल्ड एज वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स 1993, जो वियना में हुई, वियना वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस. वहाँ से ये इंडिया पार्टिसिपेटेड इन दैट. सो क्विकली सितंबर में फिर इंडिया प्रोमलगेटेड एन ऑर्डिनेंस, और ऑर्डिनेंस से ह्यूमन राइट्स कमीशन इस्टेब्लिश हुआ. एंड देन रिट्रोस्पेक्टिवली नेक्स्ट ईयर ह्यूमन राइट्स एक्ट आया, और इट वाज इन्फोर्स्ड रिट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम सितंबर 1993, ऑल्दो इट वाज इन्फोर्स्ड इन 1994 जनवरी. So Human Rights Act और Human Rights Commission, क्योंकि Human Rights Commission has been constituted under Human Rights Act. इसके अलावा भी कुछ, जैसे मैं आपसे बता रहा था, अदर इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसी नेचर के हैं, अपार्ट फ्रॉम जो क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज़ हैं ह्यूमन राइट्स के मेंटेनेंस और एस्टेब्लिशमेंट के लिए, जिनमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है, और इसी तरह नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ है, नेशनल कमीशन फॉर विमेन है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, और नेशनल कमीशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज. ये 6 हैं या 5 हैं, जितने भी हैं, 7 हैं रादव, जो टोटल हैं. इनके अलावा भी शेड्यूल्ड कास्ट का कमीशन, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, माइनॉरिटीज़ का, विमेन का, बैकवर्ड क्लासेस का, चाइल्ड राइट्स के, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के लिए, and persons with disabilities के लिए. And you know that 1995 की legislation जो थी persons with disabilities की, it was replaced by 2016 legislation protection of persons or protection of rights of persons with disabilities 2016. But we are concerned with the Human Rights Commission, so let's go into the history of that Human Rights Commission, or what Human Rights Act adopts. एक्चुअली मैंने जैसे बताया आपको कि ये वियना कॉन्फ्रेंस के बाद जो आया, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया में इस्टेब्लिश हो गया और ह्यूमन राइट्स एक्ट आ गया. अब ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इस्टेब्लिश क्या किया, ड्यूअल सेट्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस फॉर जो मेजर काम है वो मॉनिटरिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स है. वो दैट इज़, एक तो नेशनल लेवल पे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इस्टेब्लिश किया, स्टेट लेवल पे स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशंस इस्टेब्लिश किए.
और काम इनका यही रखा गया। कई सारे काम हैं जो ह्यूमन राइट्स एक्ट के प्रोविजन में मिलेंगे। फॉर एग्जांपल इंक्वायरी इनटू द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक काम है इनका। इसी तरह दूसरा काम है इट कैन रेकमेंड द मेजर्स, सेक्शन 16 17 और 18 में ये मिलेगा आपको। इट रेकमेंड्स मेजर्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और वो रिकमेंडेशंस एग्जीक्यूटिव को ही जाती हैं। एंड इट रिव्यूज ऑल्सो द फैक्टर्स, मैनी फैक्टर्स जो ह्यूमन राइट्स को थ्रेट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेररिज्म है and other inhibitations हैं. It has a mandate of also undertaking studies under section 12, probably I don't know which is the subclause, but section 12 में है ये, 12F है क्या? So it undertakes the studies in matters of human rights. इसी तरह it promotes research in the fields of human rights, and it makes jail visits also to study the conditions of the inmates of the jail, and it encourages the efforts of national non-governmental organizations, NGOs, directed towards the working of human rights. It considers other mechanisms which are aimed at the protection of human rights, and it can ask for record of any proceedings going on from a court or an office with respect, if it thinks it's necessary in respect of human rights. So these are the functioning or structuring of the human rights commissions. अब हम बस नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पे फोकस करते हैं, नॉट ऑन द स्टेट कमीशंस, बिकॉज इसमें टाइम बहुत लग जाएगा। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में जो खास चीज़ समझने की है, इट इज़ द कंपोजिशन ऑफ NHRC, यानी मेंबर्स कौन कौन से बन जाते, कौन कौन इसमें मेंबर होता है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की मेंबरशिप एज अ स्टूडेंट्स ऑफ लॉ आपको पढ़ के थोड़ा सा हो सकता है डिसअपॉइंटमेंट भी हो जाए, बिकॉज कंपोजिशन में देयर इज नंबर 1 अ चेयरपर्सन, फर्स्ट इज द चेयरपर्सन, and chairperson has to be a person who has been a Chief Justice of India or a Supreme Court judge. He should have, presently it is Dattu, Justice Dattu, HL Dattu, and previously it was interim to ek the, but before him it was KG Balakrishnan, and it started with Ranganatha Mishra in 1993. So chairperson should be a Chief Justice of India, or should have been a Chief Justice, rather he has been a Chief Justice of India or a judge of the Supreme Court. And then there is one member who has been a judge of the Supreme Court of India. Number 2 is one member who is a judge of Supreme Court. He should have been a judge of the Supreme Court or Chief Justice of a High Court. Even Chief Justice of a High Court भी हो सकता है. So this is ये हो गए 2 members, and then there are 3 members, और ये 3 members में से एक member woman होना ज़रूरी है. There's a reservation of 1 seat. One of these 3 members should be a woman, and they are persons जिनको persons of eminence कह सकते हैं हम, not statutory language ये नहीं है, but they are persons who have knowledge or practical experience in the fields or matters of human rights. तो इसमें 3 persons including 1 woman who have educated knowledge in the matters or practical experience in the matters concerning human rights. Then जो बाकी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशंस हैं, नेशनल कमीशंस हैं ना, जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, या इसी तरह प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का है, या डिसेबिलिटीज़ का है, जो उन सारे कमीशंस के चेयरपर्सन्स होते हैं, दे सर्व एज एक्स ऑफिशियो मेंबर्स. इसको कह सकते हैं, एक फोर्थ तो नहीं कहेंगे, इसको एक्स ऑफिशियो कहेंगे. जितने भी अदर कमीशंस हैं जिनका मैंने पहले जिक्र किया, उनके चेयरपर्सन इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं. इसी तरह स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी ऐसे ही है, इसी तरह का कॉम्पोजिशन है, बट नॉट इट्स सिमिलर बट नॉट सेम. ऐसा नहीं है कि ऐसे ही जजेस वगैरह हो, बट इट विल टेक अ टाइम, तो हम उसमें नहीं जा रहे हैं अभी. वी विल नाउ, अब एक्चुअली बताना जो मुझे था, जो डिसअपॉइंटमेंट है कि जो सेक्शन 3 and 4 आप देखेंगे ह्यूमन राइट्स एक्ट का, कि अपॉइंटमेंट जो होता है इन मेंबर्स का,
यानी क्यों, बिकॉज ये तो एलिजिबिलिटी है, इनका अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट ऑफ करता है, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमेटी. एंड सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 ऑफ द ह्यूमन राइट्स एक्ट सेज कि उस कमेटी में कौन कौन होना चाहिए. एंड देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिकॉज एग्जीक्यूटिव virtually and rarely, to be honest, executive makes an appointment in their case. For example, for instance, it is definitely the कि section 3 और section 4 अगर आप देखेंगे एक्ट का, it provides कि इस कमेटी, जो कमेटी रिकमेंडेशन भेजेगी प्रेसिडेंट के पास, it is constituted of prime minister, number 1, as a chairperson, number 2 home minister, नंबर 3 लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ बोथ हाउसेज, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, लोकसभा भी राज्यसभा भी. ये तो हो गए दो दो 4, और दो और हैं जो 6 बन जाते हैं टोटल, और दोनों स्पीकर्स और चेयरमैन है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड डेप्यूटी चेयरमैन सारी ऑफ द राज्यसभा या अपर हाउस जिसे हम कहते हैं. दिस इज द कमेटी. सो there are matters of considerations in that, but we'll limit our debate to the academic discussions only. Now let's move on to कि functions क्या करता है ये, क्योंकि अभी हम provisions से ही जा रहे हैं. Finally we'll come to that part जो हमें discuss करना है human rights के बारे में. There are two sections, for example 30 and 31. You'll find that section 30 and 31 of the Human Rights Act provides for establishment of human rights courts, जो सेशंस कोर्ट के लेवल के होंगे और हर डिस्ट्रिक्ट में होंगे. and you will see that there is no compliance, और इन कोर्ट्स का काम ये था under the act that they will take the cases of human rights on fast track basis. And it is yet to be seen that there is no compliance. No courts have been established within the national realm, and last year भी Supreme Court ने यूनियन गवर्नमेंट्स से रिपोर्ट तलब की इस बारे में कि सेक्शन 30 और 31 के अंडर क्या ऑब्लिगेशन और कमिटमेंट है गवर्नमेंट्स का. अभी तक कोर्ट्स क्यों नहीं एस्टैब्लिश हुई हैं, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेशंस कोर्ट के लेवल पे कोर्ट्स एस्टैब्लिश करने को कह रहा है. सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चरिंग. एंड जो पावर्स हैं, पावर्स जो कोर्ट्स की हैं यहाँ पे पाएंगे आप, मोस्टली वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंडर नहीं है. you'll find कि सीपीसी के सभी पावर्स दिए हैं इन द मैटर्स ऑफ इंक्वायरीज, और जो वो करते हैं इन्वेस्टिगेशन, उनमें पावर्स जो दिए गए हैं वो सीपीसी के अंडर है, नॉट सीआरपीसी, विद सर्टेन बहुत माइन्यूट और मिनिस्क्यूल प्रोविजंस व्हिच हैव बीन गिवन अंडर द सीआरपीसी. दैट इज व्हाई ऑथर्स लाइक संजय हजारिका एंड अदर हैव ऑब्जर्व्ड दैट human rights commissions are toothless tigers. So tiger to hai, but they are toothless. Their powers should have been much more than what have been delineated in the provisions. इस डायरेक्शन में सेक्शन 18 स्पेसिफिकली रिमार्केबल है, जो हमें एज स्टूडेंट्स समझना चाहिए. सेक्शन 18 ऑफ द एक्ट गिव्स सर्टेन पावर्स टू द कमीशन, जिसमें रिकमेंडेटरी पावर्स है मेजरली. फॉर एग्जांपल इट कैन, आफ्टर मेकिंग इंक्वायरीज अंडर द प्रोविजन 17, सेक्शन 17 में ये पावर्स हैं कि वो इंक्वायर कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है इन द केसेस ऑफ ह्यूमन, सो मोटो भी करता है, अपॉन कंप्लेंट्स भी कर सकता है. बट सेक्शन 18 फिर उसके बाद देता है रेमेडी करने के लिए क्या करेगा. दे आर क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज, सो दे आर नॉट रेगुलर कोर्ट्स, सो दे डोंट हैव प्यूनिटिव पावर्स, और but they have powers to grant compensation. That's why CPC के powers हैं. So it can in the first place it has the powers to make recommendations to the government, central government को, to make recommendations on the cases or instances of human rights abuses, what should be done, etc. And it has also powers to grant compensation. And this is actually, these two have been the thorny debates in this act, because आप देखेंगे कि what is the nature of the recommendation. If we go by the plain drafting of this statute or reading of this, तो जो phrases use हुए हैं recommend यूज हुए हैं, और दूसरा के फिर उसको इसलिए भेजा जाना है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि ये जानने के लिए कि उन पे क्या एक्शन लिया गया. सो प्लेन रीडिंग से ये लगता है कि
एक्शन मीन्स नो एक्शन, इट इंक्लूड्स ऑल्सो इवन नो एक्शन। तो अगर एक्शन नहीं मिलेगा तो इतनी डिस्क्रिशन है। बट पर्पसिव इंटरप्रिटेशन की तरफ अगर जाया जाए तो इट विल सी, इट विल सीम दैट पर्पस ये था इन वर्ड्स के डालने का कि एक्शन लिया जाए। सो इट इज, देयर इज नॉट येट एनी लैंडमार्क जजमेंट ऑन दैट कि ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो रिकमेंडेशंस होते हैं आइदर और दे आइदर ऑब्लिगेटरी एंड बाइंडिंग, या वो सिर्फ रिकमेंडेटरी नेचर के होते हैं। एंड मद्रास हाई कोर्ट की फुल बेंच एक केस को सुन रही है प्रेजेंटली, बट इसका आउटकम अभी आया नहीं। सो उसमें यही अंडर दिस इज द क्वेश्चन ऑफ लॉ वेदर दीज रिकमेंडेशंस आर ऑब्लिगेटरी और नॉट। बट टिल नाउ देयर हैव बीन द रिकमेंडेशंस, खासकर कॉम्पेंसेशन के मैटर में आप देखेंगे there have been gross non-compliances from the bodies responsible for that. तो हुआ नहीं है कई केसेस में। ह्यूमन राइट्स कमीशंस मेड recommendations of compensations to the victims, so to another power is to, but they have not been complied with. So another power, this power is to grant compensation to the victim. And number third is to initiate ये recommendations देता है, ये सब it cannot grant recommendation, it is recommendation for granting of compensation or initiation of proceedings or prosecution. So this is also to be done by the central government. ये खुद से ह्यूमन राइट्स कमीशन compensation नहीं दे सकता, compensatory orders तो पास कर सकता है, लेकिन देना it ultimately rests in the hands of the executive. So it can recommend to the executive to grant compensation or initiate prosecution if there is an erring authority of the state or any other agency, and then it can also recommend to grant interim relief, and all these powers are recommendatory in nature as per the bare language. But अभी other चीजें भी कर सकता है commission towards this. So अब आते हैं वापस ह्यूमन राइट्स के रिस्पेक्ट में, ये डेफिनेशन क्या अडॉप्ट करते हैं। द डेफिनेशन इज वेरी ट्रिकी, एंड जो डेफिनेशन है इट्स नॉट अ कॉनोटेशनल डेफिनेशन और कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो ह्यूमन राइट्स एक्ट अडॉप्ट करता है। यू विल फाइंड इट्स अ रेफरेंशियल डेफिनेशन, ये रेफरेंस देता है किसी और चीज़ की तरफ। जैसे आपसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज रेफरेंशियल एंड व्हाट इज कॉनोटेशनल डेफिनेशन, यही बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपसे पूछिए कोई केला क्या है, तो यू विल डिफाइन लाइक ये ऐसा फल है जो सिलेंड्रिकल शेप का होता है या राउंडेड होता है और इस लेंथ के दरमियान से होता है, इस लेंथ के रेंज में होता है, यानी 5 इंच से लेकर के 8 इंच का केला होता है, और इसको छिलका उतार के खाया जाता है, और छिलके के अंदर एक मीठी चीज़ होती है खाने के लिए, जेली जैसी, और अगर सड़ जाए तो काला होता है। दिस इज द डेफिनेशन। और रेफरेंशियल डेफिनेशन क्या है? फॉर एग्जांपल ए है, उससे पूछा केला क्या है, और बी कोई केले का बागबान है, सो इससे पूछा व्हाट इज अ बनाना हिल, से बनाना वो चीज़ है जो बी के पास है। सो इस तरह की डेफिनेशन, इल्यूसिव डेफिनेशन जब अडॉप्ट होती हैं तो कंप्लायंस लॉज का थोड़ा डिफिकल्ट होता है बॉडीज के लिए। यू विल फाइंड दैट सेक्शन 2D जो डेफिनेशन क्लॉज में है, इट डिफाइंस द वर्ड ह्यूमन राइट्स। In that sense, it means that it defines human rights means the rights relating to life, liberty, equality and dignity of an individual, which and these rights, कौन से rights guaranteed by the constitution or embodied in the international covenants। यहाँ तक तो ठीक था। आगे है and enforceable by courts in India, ये जो and clause है लगा दिया। So mandatorily human rights वही हैं which are enforceable by courts। So this definition also leaves part 4 of the constitution outside the scope and purview of human rights, although part 4 is actually the treasure of human rights। If we call part 3 bundle of human rights, part 4 is a treasure। वहां से क्या निकल सकता है ह्यूमन राइट्स के बारे में, एक्सपेक्टेशन नहीं है, बिकॉज ह्यूमन राइट्स का एलिमेंट और कंटेंट तो आइडेंटिफाई किया पार्ट 3 ने, बट पार्ट 4 में इट्स अ ट्रेजर। फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट है, इक्वल रेम्यूनरेशन है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है, न्यूट्रिशन है, और इसी तरह एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है, सिमिलरली लिक्वर्स को लेकर के है, और पंचायती राज है, डेमोक्रेटाइजेशन। ये सारा पार्ट 4 ही से था और पार्ट 3 में
लेकिन रीड किया गया बाय मेनी लेजिस्लेशंस. So it leaves that part also outside the purview of the definition, because it says कि human rights वो rights हैं which relate to life, liberty, equality and dignity of individual, guaranteed by the constitution or embodied in the international covenant. तो इसने तो constitution से ज़्यादा scope बढ़ा दिया था, guaranteed by the constitution or embodied in the international covenant. और इंटरनेशनल कोवेनेंट से रेफरेंस से मुराद ये है, ये 2F में ही आप पाएंगे, इसलिए 2F को 2D को साथ रीड करना चाहिए. इंटरनेशनल कोवेनेंट से मुराद ये समझता है ह्यूमन राइट्स एक्ट, ICCPR और ICESCR, ये दो कोवेनेंट्स and not any other covenant. So और एम्बडीड इन द कोवेनेंट्स, तो या कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किया या इन्होंने, तो इसने तो स्कोप बढ़ा दिया था. तो द मोमेंट द स्कोप स्टार्टेड टू इंक्रीज, इट वाज लिमिटेड बाय एंड क्लॉज एंड एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स. तो ये एक प्रैग्मेटिक डिफिकल्टी है, पैराडॉक्स है डेफिनेशन में, दैट कि कोर्ट्स से एनफोर्सेबल मीन्स क्या, थोड़ा लिमिट हो गया स्कोप, क्योंकि फॉर एग्जांपल directive principles are non-justiciable, so it leaves even them out of the purview of this. That's all about human rights and India. You will go through some important judgments जो contemporary times में भी आए, पहले भी आई हैं सुप्रीम कोर्ट से या many other courts से, especially with the content of human rights. और कुछ commentaries भी देख सकते हैं. And that's all about human rights and the concept of human rights in India. Thank you for your time.